recognized as a national party. Let's quickly cut across to what the national convener of the party is saying. आज इस खुशी के मौके पे मनीष जी की और जैन साहब की बड़ी याद आ रही है। वो भी अगर होते तो हमारी खुशी में और 4 चांद लग जाते। वो संघर्ष कर रहे हैं देश के लिए, हम सब के लिए। इस वक्त देश की सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें जो इस देश का भला नहीं चाहती, जो इस देश की तरक्की नहीं चाहती, वो सारी ताकतें मिलके आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही हैं। मनीष सिसोदिया का क्या कसूर है? कल मैं एक उद्घाटन करने गया था ईस्ट विनोद नगर में एक स्कूल में। सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल है और उसमें फ्रेंच पढ़ाई जाती है, जर्मन पढ़ाई जाती है, स्पेनिश पढ़ाई जाती है, जापानीज पढ़ाई जाती है। मेरी पढ़ाई हिसार के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल में हुई थी। हमारे स्कूल में भी ये सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती थी। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर वो शिक्षा दी जाती है। तो मनीष सिसोदिया का कसूर था कि उसने गरीबों के बच्चों को सपने देखने सिखाए कि सपने देखो, बड़े बड़े सपने देखो, उनको पूरा करने का जज्बा रखो। ये कसूर था मनीष सिसोदिया का। 75 साल से गरीब का बेटा गरीब रह जाता था क्योंकि अच्छी शिक्षा नहीं मिलती थी। उनको उसने सपने दिए, उनके सपनों को उसने पर दिए और ये सारी राष्ट्र विरोधी ताकतों ने मिलकर मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर डाल लिया। जैन साहब का क्या कसूर था? उनका कसूर था कि अगर इस देश के अंदर कोई भी पैदा हो उसको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। गरीब आदमी हो तो इसका मतलब यह नहीं कि वो रुलेगा, वो कॉरिडोर में पड़ा रहेगा, उसको दवाई नहीं मिलेगी, उसको इलाज नहीं होगा। अच्छा इलाज कराएंगे, सबका अच्छा इलाज कराएंगे, सरकार कराएगी इलाज अच्छा। ये कसूर था सत्येंद्र जैन का। उसने एक सपना देखा था देश के लिए। सारी राष्ट्र विरोधी ताकतों ने मिलकर उसको बेचारे को जेल के अंदर डाल दिया। लेकिन बेचारा नहीं है, वो भगत सिंह का चेला है। तो ये सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें आम आदमी पार्टी को रोकना चाहती है, लेकिन ऊपर वाला हमारे साथ है। किसी की हिम्मत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, नो वन कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। इस पूरी यात्रा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुर्बानियां दी, बहुत संघर्ष किए। हमारे बहुत साथी हैं जिन्होंने खूब डंडे खाए। आपने भी खाए। फ्रैक्चर हो गया था, बहुत डंडे खाए, जेल गए, बहुत लोग जेल गए। हमारी संतोष कोहली शहीद हो गई। हमारे साथ मीरा सान्याल जी होती थी। बिपिन करके एक लड़का था पंजाब में, चुनाव में प्रचार के दौरान उसका हार्ट अटैक हो गया। और भी ऐसे कई लोग हैं जिनको हमने इस यात्रा के दौरान खोया है। आज इस मौके पे हम उन सबको याद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन सबको शांति दे, उनकी आत्मा को शांति दे, अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया। अपने परिवार नौकरी करते थे, अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ के आ गए क्योंकि उन्होंने सबने सपना देखा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब देश के अंदर अच्छी शिक्षा मिलेगी। वो सब बड़े खुश हैं कि दिल्ली के अंदर, अब पंजाब के अंदर जिस तरह से मॉडल गवर्नेंस का बनाया जा रहा है, उनके सपने पूरे हो रहे हैं। बहुत लोगों ने संघर्ष किया है और आज टाइम है अपनी आइडियोलॉजी को याद करने का, अपनी विचारधारा को याद करने का। आम आदमी पार्टी की विचारधारा के 3 स्तंभ हैं। याद है ना सबको? याद नहीं है? 3 स्तंभ हैं। कट्टर ईमानदारी, मर जाएंगे,
देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। एक टाइम की रोटी कम खा लेंगे, लेकिन बेईमानी नहीं करेंगे। बेईमानी का पैसा घर में नहीं आएगा। कट्टर ईमानदारी। दूसरा स्तंभ है कट्टर देशभक्ति। देश के लिए जरूरत पड़ेगी तो जान हाजिर है, फांसी पे चढ़ जाएंगे। और तीसरा स्तंभ है इंसानियत। इंसान को इंसान समझना है। इन लोगों की तरह गुंडागर्दी नहीं करनी। गुंडागर्दी हमारी विचारधारा नहीं है, उनकी हो सकती है। इंसानियत, इंसान के लिए कुछ भी करने की जरूरत पड़े, इंसान से कोई इंसान से मोहब्बत करनी है। हम गाते हैं ना, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। तो इंसानियत तीसरी हमारी आइडियोलॉजी है। पहली बार देश के अंदर पहले कहते थे चुनाव लड़ने के लिए इतना पैसा चाहिए, बेईमानी तो करनी पड़ती है। हमने दिखा दिया कि ईमानदारी से चुनाव लड़े भी जा सकते हैं और जीते भी जा सकते हैं। हमने दिखा दिया कि ईमानदारी से सरकार चलाई भी जा सकती है और सफल सरकार चलाई जा सकती है। हमने साबित कर दिया कि सफल सरकार तो ईमानदारी से ही चलाई जा सकती है, बेईमानी से सफल सरकार नहीं चलाई जा सकती। तो जैसा मैं कह रहा था, भगवान हमसे कुछ कराना चाह रहा है। हम सबका सपना है कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने, मेक इंडिया नंबर 1। और हमारा देश बन सकता है नंबर 1। हमारे देश के अंदर क्षमता है, लोगों में क्षमता है। और शायद भगवान ये चाहता है कि ये भगवान की भारत को दुनिया का नंबर 1 देश तो ये आम आदमी पार्टी वाले ही बनाएंगे। ये काम हमारे हाथों से ही कराना चाहता है। देश की राजनीति के अंदर राजनीति को एक नई दिशा दी है। अभी तक जब भी ये लोग चुनाव में आते थे, केवल और केवल गुंडागर्दी, गाली गलौज, उसने उसको गाली दे दी, उसने इसको गाली दे दी, उसने उसको कुछ कह दिया, उसने इसको कुछ कह दिया। टीवी वाले आते थे, जी उन्होंने आपके बारे में ये बोला, आपको क्या कहना है? अरे बोलने दे, क्या हमको क्या लेना देना, किसी ने क्या कहा हमारे बारे में। बस यही चलती थी राजनीति। इसने ये बोला जी आपके बारे में, आपको क्या कहना है? उसने ये बोला जी आपके बारे में, आपको क्या कहना है? जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे पहली बार इन सबको, सबसे बड़े नेता को एक फर्जी क्लास में ले जाके बिठा दिया हम लोगों ने। वो पता नहीं असली स्कूल में गए कि नहीं गए, लेकिन इस जिंदगी में उनको एक दिन असली स्कूल में भी भेजेंगे। पहली बार देश की राजनीति में स्कूलों की बात होने लगी है। जहां हम जाते हैं चुनाव लड़ने, वहीं पे सारी पार्टियां स्कूलों की बात करती है, अस्पतालों की बात करती है, मोहल्ला क्लिनिक की बात करती है। सुन के अच्छा लगता है। यही तो होनी चाहिए राजनीति। असली राजनीति तो यही है कि स्कूल की बात हो, राजनीति, पानी की बात हो, बिजली की बात हो। अब सारी पार्टियां कहती है बिजली फ्री देती नहीं है, कहती तो है, कहलवा तो दिया सबसे। अमित शाह जी ने भी एक, मेरे को याद है, कहीं बोला था, वेस्ट बंगाल में जाके बोला था, हमारी पार्टी की सरकार बनी तो इतने यूनिट बिजली फ्री। कहलवा सबसे दिया, करवा भी देंगे सब लोगों से धीरे धीरे। एक बारी और सब लोगों को याद दिला दूं, कई बार बोल चुका हूं, हम लोग आम आदमी पार्टी में मरने मिटने के लिए, देश के लिए आए हैं। अगर किसी के मन के कोने में कभी आए पद की इच्छा, पैसे की इच्छा, प्रतिष्ठा की इच्छा, तो या तो वो फीलिंग निकाल देना और या आम आदमी पार्टी छोड़ देना। गलत पार्टी में आ गए। और उसमें अब एक चीज और ऐड कर रहा हूं, ये अब जेल में डाल रहे हैं। मैंने कहा ना, सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें इकट्ठी हो गई है आम आदमी पार्टी के खिलाफ।
वो नहीं चाहती कि देश की तरक्की हो, वो नहीं चाहती देश में स्कूल खुलें, वो नहीं चाहती देश में अस्पताल बने। वो सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे को रोकना चाहती हैं, देश की तरक्की रोकना चाहती हैं। वो अब आपको सबको जेल में डालेंगे, एक एक करके सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा एक एक करके। कम से कम 8 से 10 महीने जेल में जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि कुछ करा ही नहीं, फिर उसके बाद तो बेल वेल मिली जाती है। तो अगर किसी के मन में डर है, अगर किसी के मन में डर है, तो आम आदमी पार्टी छोड़ देना। जैसा मैंने कहा, 2 किस्म की राजनीति देश के अंदर चल रही है। एक पॉजिटिव राजनीति, आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर हम चुनाव लड़े, हमने कभी किसी को गाली नहीं दी। हमने कभी किसी को गाली नहीं दी। हम हमेशा, मैंने पिछले चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में, चुनाव के पहले बोल दिया था कि भाई मैंने 5 साल में काम किए, अगर आपको मेरे काम अच्छे लगे तो मेरे को वोट देना, नहीं तो मेरे को वोट मत देना। काम के नाम पे वोट मांगे हमने। पंजाब में गए, हमने अपनी गारंटियों के नाम पे वोट मांगे। गोवा में गए, गुजरात में गए, अपनी गारंटियों के नाम पे, काम पे वोट मांगे। ये पॉजिटिव राजनीति है। और ये लोग जो गुंडागर्दी करते हैं, मारकाट करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये नेगेटिव राजनीति है। इस देश को पहली बार हम लोगों ने एक पॉजिटिव राजनीति दी है। आज इस मंच से इस देश की जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि भारत को नंबर 1 देश बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए। और आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए एक नंबर दे रहा हूं, उस नंबर पे जो लोग देश भर में, आप तो जुड़े हुए हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है, इस पे मिस कॉल मारें जो देख रहे हैं। 9871010101 9871010101 इस नंबर पे मिस्ड कॉल मारें आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए। और अंत में भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अगर इस देश की सेवा के लिए ये जान चली जाए तो अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। इस शरीर का कतरा कतरा, मेरे शरीर के खून का कतरा कतरा इस देश के लिए अगर शहीद हो जाए तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। देश के उन सब करोड़ों लोगों को सलाम जिन लोगों ने इतने कम समय में आम आदमी पार्टी पे इतना विश्वास किया, इतनी बड़ी हमको जिम्मेदारी दी। राष्ट्रीय पार्टी बनने की जिम्मेदारी कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि ये जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ हम लोग पूरी कर पाएं, ऐसा हमें ताकत दें, हमें सद्बुद्धि दें। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की। सभी लोग अपने अपने स्थान से एक बार खड़े हो जाएंगे, हम लोग राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे। सभी साथियों से And there we saw Arvind Kejriwal obviously bearing it all and with a celebratory message that the party has achieved national party status. That is something that the party is happy about. And secondly, how he implored his karyakartas that they should be ready to do their best, and also if there is the wrath of law, then they should be ready to face it. Siddharth Sharma, Aam Aadmi Party spokesperson, joins us. What better timing, Siddharth, for you, obviously, to celebrate the national party status, and also what the national convener Arvind Kejriwal said. Your thoughts on that? Yeah, Anand, it is obviously a very happy moment for Aam Aadmi Party workers, and there is a saying in Hindi which says that "Booth ke paon palne mein hi nazar aa jate hain." In English, it says that coming events cast their shadow before they happen. There is always a dawn before the sun rises. Nobody can stop. I think yesterday the national convener very clearly said that nobody can stop an idea whose time has come.
Aam Aadmi Party is less of a political party and more of an idea. And what is that idea? The basis of Aam Aadmi Party's inception lies in the high degree of disillusionment that the political parties of India had brought about in around 2013, Mm-hmm. because there is cutthroat competition in politics. Politics itself means that it is cutthroat. Politics is cutthroat. Aam Aadmi Party has come in with a refreshing idea which says that let us not get into cutthroat politics, let us get into humane policies. The key differentiator between Aam Aadmi Party and any other political party in India is that other political parties do a lot of politics. Aam Aadmi Party invests itself in a lot of humane policies. This has been a journey between from representative democracy to participatory democracy. Because if you want to make India number one, it Mm-hmm. cannot be made by any singular person, howsoever good intentioned he is. It cannot happen with a group of people, howsoever well intentioned or capable they are. For India to really arrive on the world scene, you have to have 140 crore people as its stakeholders. And with 140 crore people as stakeholders, you cannot get it through a representative model of democracy. It has to be participatory model. And that is why Aam Aadmi Party's two governments in Delhi and Punjab, they have been doing so well. They have come back with a humongous mandate. The people have loved Aam Aadmi Party in Delhi and Punjab because of the policies that they bring. And Aam Aadmi Mm-hmm. Party's policies, when we frame policies, it is not that a few people, the chief minister or the cabinet, sit in an air-conditioned room and come up with policies. We do surveys, we do ground surveys, we see what people really want, what are the pain points of the people, and then come up with certain policies. So I think it's a party of educated people. It's a journey in which only 10 years, people say a lot of things about the meteoric rise of BJP after 2014. But just Mm-hmm. to juxtapose it, Anand, despite BJP's meteoric rise, Aam Mm-hmm. Aadmi Party has risen uh, in when BJP has been having its meteoric rise. So it is like a David and a Goliath fight, and David is right now seems to be winning hands down, because BJP's politics, and it's not just BJP's politics, most of the politics in India, the traditional political parties, they try to create a chasm between people, they divide people, and then they make vote banks out of them. If you see Aam Aadmi Party's governance model in Delhi, when we say we will give electricity free, we will give electricity up to 300 units, we don't give it to a certain section of people. We open it up for everyone. When we say we are going to provide health care, we are not saying, we are not putting a cap, just like Ayushman Bharat says that the cap is at 5 lakh rupees, or certain beneficiaries are going to be from the below poverty line. We are making it universal health care. We are making it universal education. We are making it universal electricity. We are making it universal water. So when we do that, people start to understand that Aam Aadmi Party is coming in with a fresh air of, the key differentiator here being that they are not playing politics. And I think it's a party of educated people, unlike BJP, which prides itself in not showing the Prime Minister's degree. Aam Aadmi Party, most of the people in Aam Aadmi Party are high grade professionals, and Mm-hmm. that is the, I think today Aam Aadmi Party becoming a national party is a certification in itself that educated people, good people, well-intentioned people with a clear agenda of policies rather than politics can have Mm-hmm. a very successful stint in India. And I think that is the idea that Aam Aadmi Party represents. And this is the Right. tomorrow of India. Aam Aadmi Party is the tomorrow of India. Aam Aadmi Party is the party which is adopting world's best governance practices from across the globe and trying to Mm-hmm. bring in, implement it in India. So I think Aam Aadmi, we are obviously being somebody who's Mm-hmm. been part of the political party since the day of its inception on November 24th in Jantar Mantar 2012. It's been an 11-year journey, and it's been an Mm-hmm. exhilarating journey, not just for us, but for my entire family and the thousands and thousands of volunteers and workers and people that we have met. Anand, I've worked with the party in many states in different capacities. And one thing I can say that wherever we go,
irrespective of the electoral results that we get. Our volunteers are given so much respect by the electorate, by the people. Everyone, wherever we go, say they are very happy that certain professional people, educated people, well-intentioned people coming in, just directly reaching out to a voter, giving him respect, asking for his feedback. That itself is a very unique thing in Indian democracy. I think AP, Aam Aadmi Party has well and truly arrived, and Aam Aadmi Party is the future of India. Right. Also, Siddharth ji, talking about corruption aspect of that is bogging down Aam Aadmi Party these days, and the Chief Minister also, Chief Minister of Delhi and National Convener Aam Aadmi Party, Arvind Kejriwal did mention कि अगर जेल जाने की जरूरत पड़े तो तैयार रहिएगा. Do you actually see this from a victim's point of view that two of the ministers are right now in jail? Whatever happens next remains to be seen. But if the law is taking its course, do you see some politics behind it, or is it just an, if quote unquote, if I may say, an escapist tendency from the law? I think, Anand, if the law should be taking its course, the law should be taking its course equally for everyone. If Mr. Manish Sisodia is in jail for doing certain unlawful things, then the BJP MLA in Karnataka and Mr. Yediyurappa, who is the mascot of BJP in Karnataka, they should also have been in jail. So everyone today knows that, for example, they put Manish Sisodia in jail for an excise policy, which according to them, according to the BJP, has brought loss to the exchequer. Pray, tell me, Anand, how come that same policy which Manish Sisodia brought in Delhi, that same policy has been brought in Punjab, and that has given a revenue of 6,000 crore rupees extra to Punjab. So everyone today knows it's not a victim card we are playing. It's BJP. Let's understand one thing, Anand. What is power? We have to understand the definition of power. Whenever people give a mandate to any political party, that is power. The mandate is given to serve people. Unfortunately, in India, even earlier during Congress regimes and right now under BJP regime, more so, what has happened is that they are seeing power as some kind of weapon that can be wielded on your opponents. So let us understand here, power is not a license to punishing others. Power is a license to serve everybody, not punishing a few. Because in India, punishment, the jurisdiction of punishment lies with the judiciary. The government is not supposed to punish people. Government is supposed to facilitate, ameliorate people's issues. Unfortunately, in India, power, the definition of power itself has been twisted to such an extent that whoever gets a little bit of power starts to say that मेरे हाथ में एक डंडा मिला है, ये डंडे से मैं मास्टर की तरह सबके ऊपर मैं छड़ी चलाऊंगा. So everyone knows that you a teacher in a class teacher who spanks his kids and a class teacher who teaches his kids in a different way, the kids would be more intelligent in the second kind of class where the teacher has a participatory and a very accommodating behavior. So BJP, the problem with BJP is that it has got power after a very long time in India. And I think that they have not yet understood the concept of power. For them, power still does not mean serving each and every person. For example, something like security and justice. Any society automatically starts to fare very well when there is 100% security and justice guaranteed to every citizen. When a system guarantees security and justice to all its citizens, what usually happens is that the crime rate of that place starts coming down. And with the crime rate coming down, even women, children, old people who would rather not come out of their houses after sunset, they also start contributing to the society, and markets start opening up till late night. For example, in Western countries, you go to New York City never does really sleep. 24 hours there are delis and offices and places of business open. So that adds to the economy. The economy starts churning and the country starts progressing. That society starts progressing. So any government, any system that is in place, that is in power, has to understand that it has to give security and justice to all its citizens. Unfortunately, BJP has not yet understood this. It starts with a premise of kinship,
For BJP, a few people are their own and a few people are someone away. It's like George Bush saying that either you are with us or you are against us. So that problem with BJP that is why I think the progress of India that it should have happened in the last 10, 20 years, especially after the IT revolution, after the information technology and computer revolution. Other countries, like even small countries or adjacent countries, neighboring countries like Bangladesh, economy has jumped leaps and bounds. India has not yet achieved that. I think because the system here, the governance pattern here, power has not yet been understood. Rather than giving security and justice to everyone, putting all your resources, all your focus on ensuring security and justice for all, the governments here, the regimes here start to wield power something like a weapon on your opposition, on people whom you don't like. Basically, it's a very hostile kind of an adversarial relationship. I think Aam Aadmi Party is again coming out with a fresh air. In Delhi, for example, everyone knows that Aam Aadmi Party doesn't even have police or law and order in its control. Right, but still, even without something as important, as critical as law and order, not being within its jurisdiction, a government can deliver to people and deliver to an extent that it can be seen at the world stage. Aam Aadmi Party's Delhi's education and healthcare model, I'm not patting my own back. It's for everyone to see that it is a very well worth good model of healthcare and education. Even world media and world leaders have accepted. Right, so I think Aam Aadmi Party is coming out as a fresh breath of air. It is showing that you can have a very good humane policy, not wield power as a weapon, and still be very popular. Obviously, a fresh air as far as the Indian polity is concerned, but nonetheless, congratulations for achieving the national status, and also the role that Aam Aadmi is going to play in the days to come and years to come. We will keep a close eye on that. Thank you so much for joining us here on News 9 Live. News and updates continue here on News 9 Live. Keep watching it.